ठीक है, तो कल हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था, उसके कुछ जर्नल टॉपिक्स भी देख लिए थे और इंटरनेट के कुछ इशू की वजह से फिर हम फर्दर नहीं कंटिन्यू कर पाए थे, तो हम आज देखते हैं। तो पार्ट 2 के अंदर आपको इस तरह से होता है कि जैसे ही आपका पार्ट 1 एंड होता है तो फिर आपको बता दिया जाता है कि नाउ आपको जो है ना एक क्वेश्चन प्रॉम्प्ट है, ठीक है, और ये एक पेपर पे इस तरह से कुछ लिखा होता है, ठीक है। तो अब आपको वो पेपर और पेन दिया जाएगा, उसके साथ एक ब्लैंक पेपर और पेन भी दिया जाएगा। तो आपको कहा जाएगा कि नाउ यू हैव 1 मिनट, और उस 1 मिनट के अंदर आपने जो है ना कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लेने, ठीक है। पॉइंट्स वो आपने क्या नोट डाउन करने होंगे, ऑब्वियसली इस टॉपिक के बारे में, जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है जिस तरह से डिस्क्राइब एन ओपन एयर और स्ट्रीट मार्केट विच यू एंजॉयड विजिटिंग। You should say where the market is, where the market sells, how big the market is, and explain why you enjoyed visiting this market. ठीक है, तो आपने उस 1 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी में इन चीजों के बारे में, इनके जो क्वेश्चन है इनके बारे में कुछ सोच लेना है और पॉइंट्स लिखने, ठीक है। तो अब इसके लिए टिप क्या है? टिप ये है कि ना ऑब्वियसली फिर 1 मिनट जैसे ही एंड होगा तो अब आपके पास 2 मिनट्स होंगे बोलने के लिए, ठीक है। तो आप कोशिश अपनी प्रैक्टिस इस तरह से करेंगे कि आप 2 मिनट से ऊपर चले जाएं, ताकि आप खुद चुप ना हो। आपको जो है ना जो आपका इंटरव्यूअर होगा वो आपको खुद जो है ना कहे कि नाउ स्टॉप, ठीक है। तो इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। तो और इस प्रैक्टिस के लिए अब क्या हमें टिप फॉलो करनी चाहिए? टिप ये होती है कि आप लोग इस तरह से करें कि अगर आपसे एक एन ओपन एयर और स्ट्रीट मार्केट के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे किसी एक मार्केट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन ऑब्वियसली आप फिर अगर एक मार्केट के बारे में बात करेंगे तो हो सकता है कि टाइम जो है ना, टाइम से पहले आप चुप हो जाए। तो इसलिए आपको क्या करना होगा कि आप यहाँ पे 3 स्टोरीज बनाएं, एक प्रेजेंट और एक पास्ट स्टोरी और एक फ्यूचर स्टोरी। वो किस तरह से कि आप इस तरह सोचें कि आप कहें कि नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 डिफरेंट स्टोरीज अबाउट 3 डिफरेंट मार्केट्स, ठीक है। तो आप इस तरह से करके कहेंगे और आप कहेंगे कि ना पास्ट में, या जब मैं इन माय चाइल्डहुड, या फिर इस तरह से करें कि मैं एक मार्केट में जाया करता था, जो वहां पे कुछ इस तरह से, फिर ये जो क्वेश्चन कहाँ पर है वो मार्केट, वहाँ पे क्या सेल होता है, कितना बड़ा है, ठीक है, और आप क्यों एंजॉय करते हैं। और प्रेजेंट में अब एक मार्केट है जहाँ पे मैं जाता हूँ या जाती हूँ। और अब फ्यूचर के लिए मैं इस तरह प्लान कर रहा हूँ कि ना हमारे मतलब सिटी के अंदर एक न्यू मार्केट डेवलप हो रहा है और आई एम प्लानिंग टू गो देयर। और इस तरह से करके जब आप 3 स्टोरीज यहाँ पे मर्ज करेंगे ना, तो आपका पूरा टाइम यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक टिप है। उसके बाद ये है पार्ट मैम 3। ये 3 स्टोरीज बतानी है तो उस तरह से तो टेंस भी उसी तरह से चेंज करना पड़ेगा ना। यानी कि फॉर एग्जांपल पास्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें पास्ट सेंटेंसेस यूज करने पड़ेंगे, ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल, आप कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। वो ऑब्वियसली फिर आप पास्ट ही यूज करेंगे। और दूसरी बात ये है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ना प्रॉम्प्ट अगर ये कह रहा है कि आपसे एक मार्केट के बारे में पूछा गया, या आपसे पूछा जाए कि ना आप मुझे अपने मतलब कोई और चीज हो, ठीक है, तो वो किसी एक चीज को पॉइंट कर रहा है, लेकिन आपको मैं कह रही हूँ कि 3 स्टोरीज बनाए। तो यहाँ पे आइल्स स्पीकिंग के अंदर आपको जो है ना वो जो टास्क अचीवमेंट वाला पॉइंट था, उसकी बेसिस पे आपको मार्किंग नहीं मिलती, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाला क्राइटेरिया है ही नहीं। कल भी जो हमने 4 देखे थे तो उसके अंदर टास्क अचीवमेंट तो था ही नहीं। इसलिए आप टॉपिक से डेविएट कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। अगर एक मार्केट के बारे में पूछा गया तो आप 3 के बारे में बता रहे हैं, सो इसमें कोई मसला नहीं है। उसके बाद टॉपिक जो पार्ट 3 होता है उसमें आपसे जो है ना कोई ब्रॉडर जो मतलब डिस्कशन होती है एक, या तो कभी कभी इस तरह से होता है कि वो पार्ट 2 से ही क्वेश्चंस लिंक कर रहे होते हैं कुछ, और एंड में फिर थोड़ा टॉपिक चेंज हो जाता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना आप देखें कि यहाँ पे भी शॉपिंग एट मार्केट्स, वहां पे भी मार्केट की बात की गई थी और यहाँ पे भी कुछ आपको मार्केट से ही पूछा गया है। उसके बाद शॉपिंग इन जर्नल, ठीक। तो कभी लाजमी भी नहीं है कि हर दफा ऐसा हो, लेकिन हमेशा मोस्ट यूजुअली आप कह लें कि ना पार्ट 2 का जो टॉपिक होता है उससे ही ये वाला पार्ट 3 रिलेट कर रहा होता है, और इसके आपको जो है ना आंसर थोड़े डिटेल में देने होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ जर्नल हमारी डिस्कशन थी जो हम कल कर रहे थे, उसको हमने आज कंप्लीट कर लिया। बस फिर ये टिप्स हैं जो शुरू से आपको कहती आ रही हूँ कि प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा,
अपने आप को रिकॉर्ड करें, लिसन बैक करें, अपने आंसर्स को एक्सटेंड करें, ठीक है। तो ये वही सारी बातें। तो अब हम जो है ना आज अपनी प्रैक्टिस के लिए एक लाइव टेस्ट करेंगे। तो आजिब, आप रेडी हैं? यस मैम, मैं रेडी हूँ। मैम, ये Okay. लाइव टेस्ट के अंदर ये तीनों पार्ट हमने डिस्कस करने हैं। जी बिल्कुल, तीनों पार्ट होंगे। ओके। ठीक है, तो मैं अपने पास टाइम नोट कर लेती हूँ, क्योंकि हमने देखा था जो हमारा पार्ट 1 होता है वो 4 to 5 मिनट्स का होता है यूजुअली। उसके बाद पार्ट 2 तो उसका अपना ही टाइम है, और देन एंड वाला पार्ट उसका भी एक टाइम है, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगी जिस तरह से रियल टेस्ट में होता है, मतलब हम प्रैक्टिस ही करें ऑब्वियसली, इस तरह समझ लें कि एक मॉक टेस्ट हो रहा है। जस्ट गिव मी 1 minute। ओके, तो ये तो हमने देख लिया था कि आप मतलब समझ लें कि आप टेस्ट देने जाएंगे तो पहले आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, व्हाट इज योर नेम, और इसकी तो आई थिंक जरूरत नहीं है, और चेक करेंगे आपका आइडेंटिफिकेशन और बाकी चीजें, ठीक है। तो अब मैं फर्स्ट पार्ट से ही शुरू करने लगी हूँ। तो अच्छा, ठीक है। सो in the first part of the test, I'm going to ask you some question about yourself. So let's talk about, uh, do you work or do you study? Yes, Azit. Uh, Thank you. As I am a student, so I do not work. I am studying. I am currently in sixth semester doing electrical engineering from UET Texla, and my interests are related to software engineering. And that's why I am taking IELTS exams to pursue my higher education and masters in software engineering. So you enjoy studying your subject? Basically, I am doing electrical engineering, so it has a strong relationship with the mathematics. So I really enjoy doing mathematical and problem solving questions. So I am also developing my programming skills. So interlink between the mathematics and computer science is what is taught in the electrical engineering. So in short, I really enjoy doing all this stuff because electrical engineering is a blend of computer science as well as mathematics. So I really enjoy doing it. Okay. So can you please tell me about your future plans? Sure. As I have mentioned before, I like to do masters in software engineering or generally computer science. Software actually is a subset of computer science. So I like to do masters in software engineering and really want to make my career in computer science. So these are my future plans in terms of academics. In terms of professional plans, I like to um, work for big companies like top 5 technical giants of the world, which is Facebook, Apple, Amazon, Netflix, and Okay. Google. And these are known by acronym. Okay. So let's talk about television programs. Can you tell me about where do you usually watch TV programs or shows, and why? I usually do not watch television programs nowadays because I have a lot of work to do as I am a university student. So I have a lot of assignments and stuff. So I do not find time to watch television programs, but I like to watch documentaries whenever I got time. I have watched my favorite television channel is Discovery and National Geography. I like to know about animals and how to survive in the forest if you have uh, you know uh, uh, you do not have access to basic amenities. So it really bring adventure and joy to me while watching such kind of steps, such kind of films and documentaries. So I like to watch such kind of documentaries, and I really want to cherish from these moments, and I really want to go into the Amazon and to experience such
real-time stuff as well. Okay. So you have already told me about your favorite program. So what about any program that you don't like watching? Is there any program that you don't like watching? Yes, there are a lot of programs that I do not like watching, and the among this spectrum of the programs that I do not like watching is includes political talk shows where the most of the anchors and all of the members throw their personal opinion and arguments because everyone has different opinion, and somewhat if the people are following such kind of opinions, then they can easily be biased. If they can easily be biased by the opinion that is that is somewhat mold, then it can has a huge impact over the population. For example, if I give you a practical example, if a person who is not educated or he does not know any thing related to politicals, and if he see such kind of program, then he can easily get biased by the opinion Okay. of the anchor. Okay. So last question. What do you think that you will watch any TV program in future? As I mentioned before, I like to watch documentaries and wildlife related programs. Then in the future, if I get any opportunity, then I will be watching documentaries related to mining and gold mining and coal mining, how these things are produced. And I would like to know about the lifestyle in Africa. Like Africa is rapidly developing, so I would like to watch documentaries related to this continent. So and how the business is emerging in such kind of continents. Other than that, I would like to watch documentaries related to Asia as well, because recently I have studied in one of the book about Asia, like the shifting spectrum of the Asia, and the book is really motivational in terms of developing business in Asia. Like the top economies of Asia, like Japan, Singapore, and South Korea, they are developing at a high pace, and they are faster than the Western a number of Western economies as well. So I would like to know about such countries and how the production from these economies can be uh, uh, you know transfer to Africa, and how a link and a joint between these two countries can be developed, and how third world countries can contribute in developing Okay. Okay. So we are done with part 1, and now let's move towards the part 2. So can you please assure that my screen is visible? yes, it is visible. Okay. So here's the prompt. You are giving 1 minute so you can make notes about this topic, and then I'll stop you. Okay, your time starts now. Like, I have 1 minute and I have to read the prompt and then make notes, and for 1 minute, and then I will speak after 1 minute? Is that Yes. it? As soon as I'll say stop, then again I'll say start speaking, then you have to speak. Okay, your time starts now for making notes. Okay. Started a Yes, Azib, stop writing. Okay. Okay.
Your time starts now for speaking. Okay, so my topic is to describe someone who has started a business. So I came across a number of stories because I belong to a family where business is very much desired and demanded for everyone. So I have number of stories to share. So I will be sharing about the business um, of a person who has started in post pandemic era, like what will be the kind of business a person started when there is no sign of COVID-19. So the person initially do not needs any investment, and this person was educated, and this person has a master's degree in some of like engineering related domain. So other than that, he has master's degree in master's degree in engineering, but his bachelor degree was in business. So he considered himself to be efficient enough to make a business and to make a technical business. So he get master's degree, and then he tried to blend his engineering as well as business skills to make a business out of it. So the business was to import things from Japan and sell such kind of things in Pakistan. So unfortunately, the person was not skilled enough in purchasing. So he went to Japan, and he invested. He didn't himself invested a lot of money. He went to Japan and tried to convince the Japanese businessman or the technology experts that they themselves make a franchise in Pakistan, and they will he will serve as a ambassador of a Japanese product in Pakistan. So these businessmen convinced, and they give him some initial investment, and he make a franchise in Pakistan. And the business really start booming because the region in which he started his business was do not have any Japanese product. And it is, in Pakistan, there is a mindset of the people, whatever comes from Japan has a built-in premium quality. So the business started booming, and unfortunately, I do not know like how his um, engineering skill helped him to make a business, but it was really nice idea, and I really like his creativity and innovation that without any investment, and he developed a roadmap, and he get a degree in business, bachelor's degree in business, then engineering degree in masters, and then he without small investment, he started a business in Pakistan, and the business started booming in the post COVID era. So we move to the next story, which is related to business in the COVID era. Like when there started a COVID, so a lot of businesses got impacted because of large scale mass lockdown, because people are not allowed to come out of their house and purchase stuff like that. But people cannot live inside their houses, so they have basic amenities to fulfill. So the business in this era has been impacted greatly by COVID-19, and I would like to share one of the story from second hope of my family. So the story was related to a man who was a developed as well as established businessman, but he wanted to expand his business. So he make a lot of investment, in million of rupees, and he started one of the pharmacy medicine building, medicine manufacturing plant. So but unfortunately, as the pandemic strike, he was unable to renew his license for manufacturing आसिफ medicine. So यस okay. यू कैन स्टॉप नाउ। तो आपने ज़्यादा बोल दिया और मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, अभी मेरा लैपटॉप बंद हो गया है। मुज़ना, आपका लैपटॉप खुला है अगर, तो आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हैं? आप बता दें टेस्ट कौन सा है? बुक 13 है उसका, आइल्स स्पीकिंग टेस्ट 1।
नहीं हो रही मेरी जगह है, कोई और शेयर कर दे अगर किसी के पास है तो। बस 1 मिनट दें, मेरा लैपटॉप अबाउट टू ओपन, मैं करती हूँ। कोई अगर किसी के पास फोल्डर है तो ओपन करके दे। जी, किसी और के पास है बुक 13? ओके। इकबाल ये एंड हो गया? जी मैम, वो मेरा लैपटॉप बंद हो गया था तो क्वेश्चंस लिखे नहीं हुए मेरे पास, मैं बुक खोल लूँ। पार्ट 3 करेंगे अब हम। ओके ठीक है, अभी वो मुजना शेयर करेंगे स्क्रीन। नहीं, बस मैं देख रही हूँ, मेरे पास खुल गया है। ओके, सो स्क्रीन में शेयर नहीं करी, बस आपसे क्वेश्चंस कर रही हूँ, ठीक है? आज नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द पार्ट 3। आर यू रेडी? Yes, I am ready, but your voice is very much feeble to the extent of inaudibility. Okay, now it's clear. Much better. Okay, ठीक है. So the first question is, what kind of jobs do young people not want to do in your country? Would you please repeat the question, like what kind of job young people in my country do not like to do? Yes. What kind of jobs do young people not want to do in your country? Okay. Should I start speaking? Yes, sure. Okay, so young people in my country. So I would like to start with the statistics of Pakistan. Pakistan is among the countries where the median age for the people, for majority of the population is between 16 to 21 years of the age. So it suggests that most of the population of Pakistan is young. So if we look at the literacy rate of the country, it is also not very much promising. So the cities like Islamabad, Lahore, or big cities like Karachi, they have literacy rate related near to 50%. So as it suggests that nearly half of the population is uneducated. So when it comes to jobs, so people want to make different kind of jobs and specific to their region. For example, if I talk about Karachi, then the people in Karachi like to make a business. They do not like to be in a job that is related to
government sector or stuff like that. Because the culture in Karachi is very much related to business because it is near to port, and that's why people have more passion, or they are more drive towards doing job that are related to business, or in terms can make their own business. So this is the perspective of the Karachi people. So in short, they do not like to do a job or salary based job in either public or private sector. Governmental jobs are often more lucrative and appealing than private counterparts, unless there is a huge margin of salary. Okay. So if So okay. the next question is, who is best at advising young people about choosing a job, teachers or parents? Um, Sorry, I was unable to properly hear your question. Would you please Sure, reiterate the question with a louder voice? sure. Who is best at advising young people about choosing a job, teachers or parents? Okay. So you asked that who is best at advising young people about their career. So either they are teachers or parents. So it depends, like what kind of teachers and parents we have. So if our teachers are somewhat, if we are taking advice from our school teacher who has a qualification of intermediate, and he is teaching in the school Urdu and uh, Islamiyat or other native languages subjects. So I think it is not good to take advice from this teacher, because he's not qualified for the advice, and he might give you advice that is uh, uh, that has most probability that it is biased, because whatever the teacher is speaking, he or she might be speaking on behalf of his personal experience. And if his or her experience is so much wonderful, then he might not be at this position. And I often experience that whoever advising you in terms of what advice you are seeking is something that is more important. Because if you are seeking advice in software engineering and you are asking your school teacher or college teacher about such kind of domain, then he might advise you with utopian advice, like you must do this, and other people have accomplished followed this roadmap and they accomplish that. So in that perspective, and in the end, if you ask them, are you happy with your job, or are you satisfied with your job, they must often quote things like, I am not happy, but I am planning to make a switch or starting something else, and stuff like that. If they are so much confused in their personal life, then I think they are not qualified for Okay, seeking advice from. okay. So what do you think, that is money always the most important thing when choosing a job? Money always an important thing. I think it is not the most important, but it is important. Okay. If I give you a practical analogy about this concept, is that we do not oxygen, in order to live we need oxygen, but it is not, how do you know, like the importance of the oxygen is something that is um, ubiquitous. Like whatever you do is something that you must require oxygen to live. You require food to live as well as other things, but the oxygen is the primary amenity. So similar is the case with the job. Like money, if money is there, then obviously your efficiency would be increased, your interest would increase. But it is not the only parameter, and there should be other parameters. But in short, I would say uh, a job that is high paying jobs are the ones that has other factors as well. But the money is also the bait point, I would say, to Okay, attract people into that domain. okay. So do you agree that many people nowadays are under pressure to work longer hours and take less holiday? I would say, like in currently we are suffering through COVID-19, and this statement might not hold true, because the most people are working from home, and I have not been gone to university for past 2 years, because I have been taking online classes.
So I would say we are not under pressure to work long hours, but we are if we work equally hours that we used to work in normal post-COVID era, then our efficiency would highly be increased, and we might not be that much fed up. But the medium of our work is shifting towards online, so it is more painful because when we work 4 hours on online on while sitting at home is more burdensome and cumbersome than working 8 hours on site. So I think it is the medium of our communication, I would say, Okay. that we are feeling So more pressurized. Indeed, we are not working more hours, we are working less, and we are feeling more tired than we used to work for the normal hours. So this is my perspective of the things. okay. So what is the impact on society of people having a poor work-life balance? Poor work life balance, so it has a drastic impact. Like I would say, if you're working a lot of times and you are not giving proper time to your health as well as family, then obviously misery will come by. If I quote the example of someone or average family, the average family do not pay much attention to waking up early in the morning and do proper exercise so that their body flexibility increases and their blood circulation increases. So they do not prefer such kind of things, and due to that, they obviously pay more attention to things through which they can make assets. So in the end, what happens is that they drain all the assets they have made in their young lives, in their old age, in order to regain health. So this is some important parameter. Like, we have to maintain a healthy life balance. We have to wake up early, we have to do exercises, and give proper time to our family. If you have kids, then it is more important to give proper time to your kids, because it is the blueprint that you are imparting on their mindset. If they say that my mother or my father is not paying attention to me, then he may develop a mindset that working a longer hours is something that guarantees success if you are successful. Okay. And if you are unsuccessful, unfortunately, then it will develop an opposite mindset upon your kids, that working longer hours cannot give you success, and they will carry away with your opinions, like whatever you make for justifying um, your unsuccessful Okay, means. thank you, Azib. So we are done with speaking test. Okay. ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चन है चैट में? रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो अब हम जो है ना कमेंट्स देना चाहते हैं आपके टेस्ट के ऊपर। तो आई वुड से कि सब जो है ना, जिसने भी जो चीज़ें नोट की हैं, तो वो सब कंट्रीब्यूट करें कि आप लोगों को क्या लगता है कि आज़िब की क्या मतलब मिस्टेक्स थी और क्या चीज़ें फाइन थी। जी, जिस तरह मैम हुमा ने कहा कि रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, ओके। और एक चीज़ मैंने ये नोट की कि जैसे ऐसे हमें फर्स्ट जो हमारा होता है ना पार्ट, उसके अंदर आप इतना ज़्यादा भी ड्रैग ना करें, लेकिन आप कुछ ज़्यादा कर रहे थे। फिर आई डोंट नो मैम हुमा इस पे हमें ज़्यादा सजेस्ट कर सकती हैं कि हमें इतने ज़्यादा लंबे आंसर देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये चीज़ मैंने भी नोट की एक बार। तो इसमें इस तरह होता है कि आपने ना टाइम को रिस्ट्रिक्ट करना होता है। तो इंटरव्यू दे रहा होता है ना, वो ज़्यादा बोलने नहीं देता। वो जहाँ पे 10 सेकंड पूछे होते हैं, 10 से 12 सेकंड फर्स्ट पार्ट में, तो वहीं पे वो रोक के अगला सवाल जो है वो पूछ लेता है। ठीक है, तो आपने वेट नहीं करना कि आज़िब अपनी बात कंप्लीट करे तो आप अगला सवाल पूछें। आपने अपने टाइम को देखना है, क्योंकि इंटरव्यू 15 मिनट का होता है, इससे ज़्यादा नहीं चलता। ठीक है, मैक्सिमम 15। तो इस टाइम को देख के आपने उसमें लेके जाना है। सही, चलें वो तो फिर उसका काम है, ठीक है। लेकिन अब मतलब आज़िब को बोलते रहना चाहिए, आपका यही ख्याल है? हाँ बिल्कुल, आज़िब बोलता रहेगा जब तक कोई उसको रोकेगा नहीं। ओके, ठीक हो गया। ओके, और मैंने 1-2 ये चीज़ें नोट की कि आप
ही की जगह पे शी बोल रहे थे, कभी कभी शी की जगह पे मतलब ही बोल रहे थे। तो एक दो ये मैंने पॉइंट नोट किए। और ग्रामेटिकल एरर्स इस तरह से थे कि ना, आप आपने एक वर्ड बोला था बिल्ड इन, तो वो बिल्डअप होता है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ मिस्टेक्स थी जो मैंने नोट की। अच्छा आजिफ, जो फर्स्ट पार्ट है ना उसके अंदर इस चीज का आप सब लोगों ने ख्याल रखना है कि पहले पार्ट को कहते हैं ये स्मॉल टॉक है, ठीक है। स्मॉल टॉक में आपने बहुत लंबी एक वो नहीं तमहीद नहीं बांधनी होती, आपने टू द पॉइंट आंसर करना होता है। एक आंसर देके, ठीक है, यानी जो सवाल पूछा उसका एग्जैक्ट आंसर देके, और फिर एक सेंटेंस और जो कि उसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करो, ठीक है। उस सवाल से पिछले की जो हिस्ट्री है या वो बताने की मतलब जरूरत नहीं, डायरेक्ट उसका आंसर और फिर उसके आगे थोड़ी सी डिटेल, दैट्स इट। सही। और मैम एक चीज बताइएगा, जिस तरह से अभी टीवी प्रोग्राम्स की बात हो रही थी, तो इसमें प्रॉम्प्ट में इस तरह से था, पहले आपने टीवी प्रोग्राम्स के बारे में पूछा कि आप कौन से यूजुअली वॉच करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज योर फेवरेट। तो जिस तरह आसिफ ने पहले ही बता दिया कि मेरा फेवरेट ये है, तो वहां पे फिर अगेन आपसे वही क्वेश्चन किया जाता है या बिल्कुल। आपने ना, मैंने नोट किया था कि आपने बोल दिया कि एज यू हैव मेंशन्ड बिफोर, लेकिन फिर भी आपका फेवरेट प्रोग्राम कौन सा है, ठीक है। आपने अपने आंसर्स को, अपने क्वेश्चंस को आजिफ के या जो भी है उसके आंसर्स की बेस पे चेंज नहीं करना। आपके सामने शीट पे जो लिखा हुआ है आपने एग्जैक्ट वही सवाल पूछना, ठीक है। ये अगले बंदे का काम है कि वो उसको दोबारा बताए, ठीक है, या इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी एग्जाम्पल दूं तो मुझे मुझे इस तरह पूछा गया था कि आप न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं या नहीं, ठीक है। तो पहले पार्ट में मैंने कह दिया मैं नहीं करती, लेकिन अगला सवाल ये था कि न्यू ईयर पे आप क्या करती हैं। तो अब उस बंदे ने एग्जैक्टली वही सवाल मुझसे पूछा, हालांकि मैं बता के आ चुकी थी, अब मेरे पास कुछ भी नहीं था जवाब देने के लिए। तो यहाँ पे अब जो बंदा बोल रहा है जिसका टेस्ट है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो इसको किस तरह हैंडल करे। सही। और अगर वो दोबारा वही चीज बता दे, फॉर एग्जांपल आजिफ ने पहले ही बता दिया कि उसका फेवरेट प्रोग्राम ये, तो वो दोबारा बता दे तो उसका क्या इम्पेक्ट होता है? हाँ, उसको एग्जैक्टली रिपीट नहीं करना चाहिए, या अगर आप बता भी देते हैं कि जिस तरह मैंने पहले आपको मेंशन किया है, और उसके आगे फिर मजीद डिफरेंट डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी, सेम टू सेम आंसर आप नहीं बता सकते, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। सही। ठीक है, तो इसका इसका फिर यही हुआ कि हमें थोड़े से प्रिसाइज आंसर्स देने चाहिए। बिल्कुल। इसका सही। यही पहले पार्ट की यही टेक्निक है कि एक एग्जैक्ट आंसर और उसकी एक सेंटेंस में मजीद एक्सप्लेनेशन। ठीक ठीक हो गया। ओके, और इसके बाद जो सेकंड पार्ट था उसके अंदर आजिफ ने सबसे पहले अपना टॉपिक एक्सप्लेन किया है और उसके बाद फिर उसकी स्टोरी सुनाई है। तो आपने टॉपिक को नहीं एक्सप्लेन करना, ठीक है, वो आपसे खुद पूछेगा। मतलब ये इकबाल आपने पूछना था कि इससे जो पहली लाइन होती है ना सेकंड टॉपिक में, वो आपने बोली, सही है। और अगर मेरा ख्याल है शायद ना भी बोलें तो आजिफ आपने एक्सप्लेन नहीं करना कि मेरा टॉपिक ये है, आपने डायरेक्ट स्टार्ट कर देना है कि आई वुड लाइक टू टेल यू 3 स्टोरीज या टेल यू अबाउट वन सच पर्सन, ठीक है। इस तरह से आपने डायरेक्ट बताना शुरू कर देना है, आपने अपना टॉपिक एक्सप्लेन नहीं करना। और इसके अलावा आई फेल्ट लाइक कि शायद 2 मिनट से ज्यादा टाइम हो गया था, तो आपके पास टाइम होता है 2 से ज्यादा नहीं ले सकते आप, ठीक है, होल सेकेंड पार्ट के लिए। और ये है कि एनीवेयर बिटवीन 1.5 मिनट से 2 मिनट तक आप बोलेंगे तो वो ठीक लेंथ हो। सही। तो हमें प्रैक्टिस अपनी इस तरह से करनी चाहिए कि हम मतलब 2 से थोड़ा सा ऊपर जाएं, ताकि फिर वो हमें खुद ही हाँ स्टॉप कर देंगे। बिल्कुल, हाँ, यानी ये इकबाल आपका काम है, वो आजिफ को नहीं कह रही, मैं आपको कह रही हूँ कि आपका काम है कि 2 मिनट की पे फौरन 2 मिनट से ज्यादा नहीं लेते हैं, 2 मिनट पे स्टॉप कर देना है और अगले सवाल फौरन शुरू कर देना है, ठीक ओके है। मैम, ठीक है ठीक है। और थर्ड, उसके अलावा मैम कोई सजेशन? हाँ, और उसकी एक एक फाइनल चीज ये कि आपने ना इसमें जो स्पीकिंग होता है उसमें हम थोड़ी लेस फॉर्मल इंग्लिश यूज करते हैं। आपने कुछ बहुत मुश्किल वर्ड्स यूज किए थे जिसकी खुद ही आपको एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ी थी, बहुत टेक्निकल वर्ड्स थे। तो ट्राई टू अवॉइड दोज वर्ड्स, और जहाँ पे ये वीकनेस आ रही थी कि जो कॉमन वर्ड्स हैं वो आप ज्यादा रिपीट करें, तो उनकी वेरिएशन ढूंढें। और बहुत टेक्निकल वर्ड्स राइटिंग सेक्शन के लिए रखें, स्पीकिंग के लिए आई डोंट रिकमेंड। क्वेश्चन करते वक्त आप कह रही हैं? नहीं, क्वेश्चन नहीं, आज जब आंसर करे थे ना तो उन्होंने कुछ बहुत मुश्किल वर्ड्स यूज किए। ओके। और एक मुझे चीज पूछनी थी कि जिस तरह से हम यूजुअली अपनी टॉक के अंदर बोल रहे होते हैं ना, ओके, डू यू नो, और इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं, तो वो वहाँ पे अलाउ होते हैं यूज करना?
थोड़े थोड़े लेस, ठीक है। यानी यहाँ पे आसिफ ने काफी दफा यू नो इस्तेमाल किया था, तो कोशिश करें कि जो हमारे डेली लाइफ में जो हम यूज कर रहे होते हैं इनसे थोड़ा सा हमें अवॉइड करना। सही। ओके जी, आजिब आप कुछ पूछना चाहते हैं या बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे साथ, वो कोई कमेंट करना चाहते हैं अगर? मैम मैं ये पूछना चाहूँगा कि सारी स्पीकिंग के बाद मेरा बैंड कितना बनता है, यानी कि अप्रोक्सीमेट? वो तो मैम इस हुमा बताएंगी। हाँ, मैं आपको बताती हूँ। वैसे ना सारी चीजें अलग अलग टेस्ट होती हैं आपकी, वो पंक्चुएशन वगैरह ये सब तो आपने डिस्कस किया होगा। तो फ्लुएंसी आपकी अच्छी थी, और पंक्चुएशन पंक्चुएशन नहीं, प्रोनाउंसिएशन वो भी ठीक थी। कुछ कुछ जगहों पे आपने जहाँ पे आप एक्सेंट यूज करने की कोशिश करते हैं ना, तो आप एक्सेंट के कोई मार्क्स नहीं होते, तो उस पर आप इजी ले सकते हैं। एज फार एज वर्ड्स जो हैं वो क्लियर है सारे, और प्रोनाउंसिएशन ठीक है। और इसके अलावा कौन से क्राइटेरियाज होते हैं इकबाल? मैम ग्रामर, ग्रामेटिकल रेंज। हाँ हाँ, वोकैबलरी, और वोकैबलरी पे थोड़ी सी वीक था आपका, और ग्रामर मेरा ख्याल है ठीक थी। इतना मसला जिस तरह इकबाल ने 2-3 चीजें पॉइंट आउट की हैं वो मसला था। तो ओवरऑल इसको मेरे मेरे हिसाब से इस पे आपको 6 बैंड मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन 6 इज नॉट बट वी आर एमिंग फॉर, तो आपको एटलीस्ट 7.5 तक एम करना है। उसके लिए जितनी भी वीकनेसेस हैं इनके ऊपर आप प्रैक्टिस करते जाएं। सही। फ्लुएंसी तो मुझे सही लगी आजिब की वाकई, और प्रोनाउंसिएशन में भी इतना ज़्यादा मसला नहीं था। ग्रामर का थोड़ा बहुत इशू था, तो मतलब मैं इन दोनों पे ज़्यादा काम करना चाहिए आजिब को, एक ग्रामर और दूसरा वोकैबलरी। वोकैबलरी बिल्कुल। ओके। मैम ये बताइएगा और हाँ, ग्रामर और एक और मैम चीज ये सुन लें बताइएगा इकबाल। जी जी मैम। पूछें आजिब। मैम मैं ये पूछ रहा था कि आपने कहा ग्रामर का इशू था, और उसके अलावा क्या इशू था? रेपिटेशन का इशू था। तो मैम ये इन दो वोकैबलरी चीजों की वजह से इतना बैंड यानी कि 6 से 9 से 3 पे आ जाता है। नहीं, सारे जो है में होते हैं ना 9। आप एक काम करिएगा, यूट्यूब पे जाके ना 6 बैंड की जरा आप वो सुनिएगा, 6 और 7 बैंड की स्पीकिंग सुनिएगा जाके, ठीक है। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस में लाई करते हैं, किस रेंज में आप लाई कर रहे हैं। और ये सेशन भी रिकॉर्डेड है, तो आप भी अपनी जो है ना सुन सकते हैं दोबारा, आपको फिर समझ आ जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ पे मिस्टेक की है। ठीक है जी ठीक है। मैम, और आपको एक ये चीज़ है कि आपको जो लगता है ना बैंड उससे आधा एक कम ही देते हैं वो, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। सही। चलें ठीक है, इसके अलावा किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ लें। और इस चीज पे भी मार्क्स आपके काउंट मतलब चेक होते हैं कि आप क्वेश्चन जो है वो सही इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सक रहे हो, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन की बिल्कुल आवाज नहीं आई तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर गलत अंडरस्टैंड किया है और गलत जवाब देना शुरू हो गए तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। वो मैम सारे पार्ट्स के लिए, यहाँ पर जैसा मैंने पार्ट 2 का पढ़ा था कि आप थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा एडिशन कर सकते हैं। अगर आपसे एक चीज पूछी गई तो आप 2 चीजों के बारे में बता दें, मतलब स्पेशली पार्ट 3 पार्ट 3 में। सही। तो हमें क्वेश्चन रिपीट करने के लिए एक दफा कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, क्या सजेशन होगी आपकी? मैम आपकी कोशिश आवाज। करें कि आप फर्स्ट टर्म में मतलब पहली दफा में ही समझ लें, क्योंकि ना वो क्वेश्चन बहुत लंबे होते हैं तो वो बीच में ही मिस कर देते हैं अगर बहुत लंबा और ज्यादा मैं कह रही हूँ वो लंबे सवाल होते हैं तो डरे कि वो क्वेश्चन आप पहली दफा में ही समझ लें। ओके, मैम की आवाज ब्रेक हो गई थी। मैम शायद ये कहना चाह रही हैं कि मतलब कोशिश करें कि आप पहले ही समझ लें, शायद मुझे इतना समझ आए।
ठीक है, चलें। और कोई क्वेश्चन किसी का? हमारा टाइम हो गया है, तो फिर अगर सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो हम सेशन को एंड कर देते हैं। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। और मोहम्मद उसामा होस्ट बन गए, तो काइंडली आप या मुझे होस्ट बना दें या फिर आप ही मीटिंग एंड कर दें। आवाज़ आ रही है मेरी? यस मैम। ओके।